one of areas he's very passionate about. His MPH thesis was also on one of very important but ignored aspect of adolescence, that is bullying in schools. He has designed various workshops which highlights the common struggle faced during adolescence. He is keen to interact with adolescents at every available opportunity. He has also authored a life skill book for teenagers called Hit It, which is an attempt to provide strategies to solve problems that teenagers go through on day-to-day basis. So I welcome Dr. Pavnesh Kumar on the stage for their presentation. गुड आफ्टरनून एवरीवन. आगे सीट्स खाली हैं, आप लोग आ सकते हो. यू कैन कम फॉरवर्ड क्विक. I request all the students to please settle down and come forward. You can come forward. I don't bite. Okay, those of you who have not found a seat, please take a seat. This is going to be a brief interaction, and I want to make sure that everyone benefits from it. So as ma'am said, my name is Dr. Pavnesh. I'm a medical doctor and a public health expert. And जहाँ तक मेरा information है, यहाँ पे जितने भी students पीछे बैठे हैं सभी फार्मेसी के हैं. किसी और स्ट्रीम से भी हैं? ओके. सो अभी जो प्रेजेंटेशन मैं करने वाला हूँ, दैट द टाइटल ऑफ इट इज क्लियर एज यू कैन सी, हेल्थ चैलेंजेस इन डेवलपिंग कंट्रीज. बट बिफोर दैट, वन थिंग दैट आई वांट यू टू बी केयरफुल अबाउट, बिकॉज फॉर मी आई एम अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट. तो डे टू डे जिन चीज़ों के साथ मैं डील कर रहा हूँ, दिस इज समरी ऑफ what I do on day to day basis. But for you it will be more useful if you see, जैसे गर्ग सर ने भी बताया था मुझसे पहले, that career and stream की जो boundaries हैं अब वो dissolve होना शुरू हो रही हैं. I have a friend, she did her MBBS, she was my classmate in 1996. MBBS करने के बाद she did her MD from IGMC, community medicine, and now she didn't like it. She went into pharmacovigilance. So she is working in that department. So what I'm about to tell you is, besides seeing this presentation like something that has to do with health, I want you to see it something that you can make your career into. Because you will see, जैसे हम आगे चलते चलेंगे, health की boundary खुल चुकी है. Lots of different streams are coming up now. At the same time, career opportunities, career options, they are also opening up. Right? So as far as I know, कुछ लोग शायद upstairs हैं who are into nursing. All these students, all these things are applicable to them also. If they choose to work as, you choose to work as a pharmacist, or they choose to work into nursing, it's fine. But if you look back, look closely, यहाँ पे there can be lots of career options that will come in the coming time. जैसे सर ने बताया कि सबसे बड़ी डिमांड मार्केट में जिस चीज़ की है, that is problem solving, right? And what we are going to talk about here is a big problem. और इस प्रॉब्लम में सिर्फ डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, सिर्फ फार्मासिस्ट की जरूरत नहीं है, सिर्फ नर्सिस की जरूरत नहीं है. There's a lot of people that are needed in the coming times. गवर्नमेंट को जरूरत नहीं तो NGOs को जरूरत है. NGO को जरूरत नहीं तो they need volunteers. So a lot of it is needed. So let's start very quick. Health challenges in developing countries. पहला. So सबसे पहले बात करते हैं. Let's go to the first aspect. Let's expand the concept of health. Right?
इज एब्सेंस ऑफ डिजीज ओनली हेल्थ? क्योंकि अगर हम प्रॉब्लम को डिफाइन नहीं करेंगे हम उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते. आप मुझे आपका नहीं पता, जब मैं डॉक्टर अपनी एमबीबीएस करने गया था तो मेरे दिमाग में आइडिया क्या था? आई यूज्ड टू थिंक, डॉक्टर के दिमाग में पिक्चर क्या आती है? ओपीडी है, पेशेंट आ रहे हैं, पेशेंट जा रहे हैं, यस, कभी उनको ट्रीटमेंट दिख रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं. दैट इज व्हाट कम्स टू आवर माइंड. बट इज दिस हेल्थ ऑल अबाउट? अगर किसी को एब्सेंस, किसी को डिजीज नहीं है, विल यू कॉल कि इसको डिजीज नहीं है एंड ही इज कंप्लीटली फील्ड हेल्दी? नो, राइट? सो वी नो दैट हेल्थ इज मच बिगर देन दैट. एंड इफ यू सी इन आवर पब्लिक हेल्थ, जब मैं अपनी मास्टर्स कर रहा था, वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल स्ट्रीम्स. There were people from pharmacy also. There were people from nursing also. So lots of different people used to come there with their experience. One was from sociology, right? So this is again. So is health merely absence of disease or infirmity? You know, it is not the case, right? It's a physical complete. When you say physical, mental, social well-being, isn't it? Right? And then let's go to the next part. Is health system merely hospitals and staff? अगर हम बात करते हैं हेल्थ सिस्टम की, आपके दिमाग में अभी क्या इमेज बन रही है? व्हाट वी थिंक? हेल्थ सिस्टम मींस हॉस्पिटल, हॉस्पिटल का स्टाफ, इक्विपमेंट है, ऑपरेशन थिएटर्स हैं, एक्सरेज हैं, लैब्स हैं, दैट्स इट. बट क्या हेल्थ सिस्टम सिर्फ इतना ही है? हेल्थ सिस्टम इज मच बिगर देन दिस. व्हाई आई एम सेइंग दिस? बिकॉज बिफोर वी सॉल्व एनी प्रॉब्लम वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट द प्रॉब्लम इज. सो फर्स्ट, हेल्थ इज मच बिगर देन द क्यूरिंग द डिजीज. एंड टू, health system is much bigger than the hospitals and the staff that is there, right? Staff may be me as doctor, you may be as pharmacist, nursing. It's much bigger than that. And so there's a career opportunity in every part of that. So now solution. अगर आज से पहले क्या था, अगर मुझे बताया जाए कि सुंदरनगर से मंडी के रोड के कुछ जगह हैं जहां पे बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, बहुत हेड इंजरीज हो रही हैं और लोग मर रहे हैं, पहला मेरे दिमाग में क्या आएगा? यहां ब्रेन सर्जन तो है नहीं, हमें ज्यादा ब्रेन सर्जन चाहिए. Yes or no? Right? But that's a wrong solution. Why? अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो हेड इंजरीज हो रही है कहां से हो रही हैं? रोड साइड एक्सीडेंट से. और रोड की कंडीशन पुअर है, ट्रैफिक कंट्रोल पुअर है. आप डॉक्टर्स 20 रख दो, एक्सीडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, विल दैट हेल्प? नो. बट इफ वी कोऑर्डिनेट विद द पुलिस एंड विद द ट्रैफिक एंड वी प्रोवाइड एग्जैक्ट डेटा व्हाट इज हैपनिंग वेयर, what will happen? We'll have a coordinated system. Less accidents, less head injuries, and less manpower required, right? And which is completely less costly than the treatment of setting up OTs, setting up new doctors and things like that, right? So health is more than just absence of disease. Health system does more than just treatment of disease, right? And solution, because now we see solution is somewhere else. So when we talk about health as a multifactorial disease, I still remember one of the example I'll give you. I was in my OPD and then we were doing a death review, right? And death review में क्या होता है, किसी pregnant lady की अगर death होती है तो she comes and उसका review करते हैं हम लोग. There was a lady from Bilaspur जो यहाँ मंडी में थी and pregnant थी, death हुई, review करने लगे. And then we found the lady reported in the hospital when she was having at that time she was having hemoglobin of 4 gram. कोई एंटीनेटल चेकअप नहीं हुआ उसका, कोई प्री प्रेगनेंसी चेकअप नहीं हुआ है, 4 ग्राम, राइट? नाउ एवरीबॉडी इज स्कैर्ड, प्रेगनेंसी इमिनेंट है, कभी भी हो सकती है. एंड देन शी स्टार्टेड टू ब्लीड. अब अगर देखेंगे अब ब्लीड होने के बाद एचपी धीरे धीरे ड्रॉप होना शुरू हुआ, 3, 2, और यहाँ से ब्लड प्रेशर जो भी ब्लड देना उसको देने के बाद इमीडिएटली उसको रेफर करना पड़ा द बिगेस्ट ऑफ द हॉस्पिटल एंड शी डाइड आफ्टर डिलीवरिंग अ बेबी इन आईजीएमसी. If you look at it, we can see नहीं, and if you try to look at the problem, you may find out, okay, hospital में अगर ज़्यादा facilities होती तो बच जाती. IGMC has the best facilities. Was the problem there? आप कह सकते हैं खून कम था, that can be the problem. But why was that less? And what do you think? Where did the problem start? Did it start when she was pregnant? Yes? No. It started way before that, while she was teenager. Right? Can it start while she was teenager? We don't know. Maybe her mother was anemic, and while she delivered, she was the fourth child, and she was like that from the very beginning. So if you see, these are the factors that we call health as a multifactorial approach. So if you see health as health, this is a much bigger picture. Hospital में जब आता है person, usually there are factors that are beyond the control of the hospital. So now we are talking about individual lifestyle factors, social and community factors, general socio-economic, cultural and environmental and social conditions. These are all the factors. If you look at that girl, there were
मे बी शी वॉज फोर्थ गर्ल, राइट? और गर्ल्स का क्या करते हैं, दे डोंट मैटर मच गांव में, मे बी उसको लगता है कि खाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चों को लड़कों को खाना खिलाना ज़्यादा जरूरी है. सोशल फैक्टर्स आर कमिंग इन टू प्लेस, राइट? या हॉस्पिटल जाना ठीक जरूरी नहीं है, हमारे पास देवता है, हम वही जाते हैं. Got it? So all the factors that you will take into, that will come to you, is that the health, the kind of people that come to us, the health starts much beyond the boundaries of hospital. It starts at home, and it happens much before जब आपके पास वो आया था, right? Now you see, अगर problem कहीं और है, then in order to solve the problem, we need to go to the root, right? Not the symptom, but what happens? अगर बुखार है तो बुखार को की दवाई देना जरूरी है, बट देन वी नीड टू फाइंड आउट इन्फेक्शन है कहाँ पे, इन्फेक्शन है कुछ और है. गॉट इट? सो नाउ व्हेन वी टेक केयर ऑफ दीज कंडीशंस, नाउ वी सी सेकंड, हेल्थ सिस्टम. एज वी मेंशन्ड, हेल्थ सिस्टम इज मच बियॉन्ड, इट्स बिगर एंड मच बियॉन्ड द हॉस्पिटल एंड द हॉस्पिटल सेटअप. सो लेट्स कम टू द फर्स्ट वन. मेडिसिन्स एंड टेक्नोलॉजी इज द फर्स्ट वन, राइट? यू डील विद मेडिसिन्स, यस और नो? यस. सेकंड, नाउ गवर्नेंस एंड लीडरशिप. इफ इट इज नॉट राइट, आज की डेट में एक व्यक्ति हॉस्पिटल में बचेगा या मरेगा, अ लॉट विल डिपेंड अपॉन द पॉलिसीज दैट आर इन प्लेस. हॉस्पिटल में अगर पॉलिसी है, सपोज अगर पॉलिसी फ्री ड्रग की नहीं होती, आदमी गरीब है और लाइफ सेविंग ड्रग की जरूरत होती, नहीं मिलती, ही वुड डाई, यस और नो? राइट? बट नाउ पॉलिसी इज देयर दैट क्रिटिकल मेडिसिन आर अवेलेबल. आपका एंटी स्नेक विनोम जो स्नेक बाइट पे होता है फ्रीली अवेलेबल है, डॉग बाइट का फ्रीली अवेलेबल है. नाउ दीज पॉलिसीज विल मेक श्योर that the person who comes to the hospital, the health is being maintained. Third one is information, very critical. अगर हम मंडी की बात करें, जब हम कोविड के टाइम पे we were taking care of patients during COVID. I was in charge of a big hospital and that was a dedicated COVID hospital. Information was vital. हमारे पास मंडी जिला में 5,000 पेशेंट्स थे जिनसे मेरी पर्सनली फोन पे बात हुई है. बट हाउ? बिकॉज दे वर एट होम. 5,000 लोगों को हॉस्पिटल अकोमोडेट करने के कोई हॉस्पिटल नहीं है. वी स्लाइस द होल डिस्ट्रिक्ट इनटू डिफरेंट सेक्टर्स. और गांव में एक टीम थी और वो टीम गांव के 20-50 लोगों की रोज फोन पे मॉनिटरिंग करती थी. जैसे ब्लड सिचुएशन ड्रॉप हुई, इमीडिएटली हमें कॉल होता था, वी यूज्ड टू सेंड द मेडिसिन, सेंड द व्हीकल, रेफर एंड शिफ्ट द पेशेंट, राइट? सो इन्फॉर्मेशन इज वाइटल, बिकॉज बिना इन्फॉर्मेशन के हमें पता नहीं चलेगा. एवरीथिंग दैट वी स्पेंड इज बेरीज अ कॉस्ट, राइट? आप यहां पे बैठे हो अभी, देयर इज समथिंग दैट यू लॉस्ट, यस और नो? व्हेन यू कम टू वन प्लेस, यू लूज समथिंग समवेयर एल्स. We call that opportunity cost. So we have to be very sure. हमें हमारे पास 100 करोड़ रुपया है, उस 100 करोड़ का हमने वैक्सीन के लिए यूज करना है या 100 करोड़ HIV के लिए करना है या टीबी के लिए करना है, क्योंकि एक बार 100 करोड़ गया तो वो गया. So information is vital so that we know where to use the resources, right? So here is where health economics comes, another field, health economics. Some of you may choose to go in that field also, right? Next is financing. As I mentioned, जब आप पब्लिक हेल्थ में पढ़ोगे, एट सम टाइम्स आपको थोड़ा गुस्सा भी आना शुरू होगा. वो कहेंगे एक आदमी की लाइफ की कीमत इतनी है. आप बोलो कि आदमी की कीमत कैसे लगा रहे हो आप, राइट? बट दे कैलकुलेट लाइक कितनी एज है उसकी, कितना टाइम बचा है उसका, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितना वेजेस हैं, कैलकुलेट एवरीथिंग, बिकॉज यू हैव इन द एंड यू हैव टू कैलकुलेट थिंग्स, यू नो. नेशनल की जो कैलकुलेशन होती है उस हिसाब से होती है. देन सर्विस डिलीवरी इज अनदर, एंड नेक्स्ट वन इज हेल्दी वर्कफोर्स. सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्थ सिस्टम, हम लोग इस सिस्टम के हिस्से में कहीं भी जा सकते हैं. This is wherever we can go, right? We can go into medicines, we can go in governance, leadership, information, financing, service delivery and healthy workforce. Now, हमारी जो कंट्री में प्रॉब्लम क्या है अभी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. I'm sorry for the example, मैं बहुत बार डिजीज के नाम लूंगा, but we remember, I hope we made it clear from the very beginning that health is not just absence of disease. But this is a good place to start. So now ये हैं हमारे पास डेवलपिंग कंट्रीज. डायरिया, इन्फेक्शियस डिजीज, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ट्यूबरकुलोसिस. हमारी कंट्री वर्ल्ड के सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर्स में से एक है टीबी के, राइट? बट हुआ क्या, जैसे कंट्रीज डेवलप होना शुरू हुई, ये इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल हो गई. लेकिन अब क्या हुआ, पहले लोगों के पास खाने को नहीं था, खाने को बहुत हो गया, अब ओबीज हो गए हैं, अब डायबिटीज शुरू हो गया, अब हार्ट अटैक शुरू हो गए हैं, राइट? बट हमारी जैसी कंट्री जिस स्टेट में है, हमारे पास डबल प्रॉब्लम है. हमारे पास डायरिया भी खत्म, हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज भी खत्म नहीं हुई है, और साथ के साथ एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, ये सब स्टार्ट हो गया है, राइट? सो नाउ हम बीच में हैं, और यहाँ पे जो बर्डन है हमारे पास ड्यूअल है. अगर आप 1990 में देखोगे तो हमारे पास सबसे बड़ा जो सेक्टर था, इफ यू सी, जो 15% आपका इंजरीज होती थी, 29% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज थी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, और कम्युनिकेबल डिजीज डायरिया से हम छोटे थे तो हम सुनते थे आंत्रशोथ का अटैक हुआ, क्या था वो, कॉलरा अटैक, एंड लोग मर गए डायरिया से. आज आप नहीं सुनोगे, राइट? बट नाउ अब आप नीचे आते हैं 2020 में,
57% जो बीमारियां हैं हमारे पास नॉन कम्युनिकेबल हैं, पर हमारे पास जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, हमारे पास जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं वो भी कभी पूरी तरह से कम नहीं है. अगेन स्टिल 24% ऑफ देम आर देयर, 19% are injuries, right? So now these are the causes. So now when we go solution, क्या health system को strengthen करने इकलौता solution है? Now you know the answer. It's not. Problem का solution, अगर problem कहीं और से create हो रही है, then solution भी कहीं और होगा, right? And now expenditure of health by government continues to be low. It is viewed as an investment, but rather than a dead loss. हम बहुत बार स्मोकिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, राइट? हमें टैक्स जनरेट होता है, गवर्नमेंट को पैसा आता है, बट द काइंड ऑफ इंपैक्ट इट हैज, जो खर्चा और नुकसान, एक बंदे को हार्ट अटैक हो जाता है, उसकी फैमिली का जो लॉस होता है, इट्स मच बिगर देन द टैक्स वी गेट, राइट? एंड देन और बहुत बार लगता है कि इन्वेस्टमेंट नहीं है. आप कहीं कोई इंडस्ट्री लगाते हो तो क्या होता है? रेवेन्यू होता है, प्रोडक्टिविटी होती है. तो कई बार ये देखा जाता है कि हेल्थ में पैसा क्यों लगाएं, आ तो कुछ रहा नहीं है हमें, राइट? बट इन द लॉन्ग रन यू सी इट्स अ ग्रेट गेन हियर. And so growth in nation income by itself is not enough if the benefits do not manifest themselves in the form of more food, better access to health and education, right? And high burden of disease is one factor. Is one thing that we have to see. So we'll keep it short and sweet क्योंकि आप लोग खाना खा के आए हो अभी, and food was really good. तो थोड़ा सा मुश्किल भी होता है फोकस करना. So now the second thing that we want to take care of is the fire. Okay, so I'll talk about example from so what we will do is we'll take one example, just one example, right? Non-communicable disease, हमारे prevalence अभी बहुत बढ़ चुका है. We'll take one disease and quickly we'll see कि उसको उसके results क्या क्या हो रहे हैं, उसके नुकसान क्या क्या हो रहे हैं, and what can we learn from it. And trust me, यहाँ इस फ्लोर में बैठा हर व्यक्ति प्रोन है. अगर आपको लगता है कि ब्लड प्रेशर सिर्फ बड़ी एज के लोगों को होता है, इट्स नॉट, राइट? कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हमारी जो डिजेनरेटिव डिजीज है, आर्थराइटिस, ये तब नहीं होती जो सोचते हैं कि 50 साल की उम्र में होती है. द डैमेज हैज स्टार्टेड फ्रॉम द टाइम वी आर बोर्न, राइट? सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. सो एग्जांपल फ्रॉम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, लेट्स सी. कैंसर, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज आर नो लॉन्गर द डिजीज ऑफ द वेल्दी. पहले बोलते थे अमीर है तू, अब तेरे को अमीरों वाली बीमारी होगी, राइट? बट नाउ टुडे दे हैम्पर people and economies of the poorest population even more than infectious disease. This represents a public health emergency in slow motion. This is the loss. जब बीमारी की बात होती है, it causes economic loss, it causes health system loss, it causes households and individuals, and then NCD burden goes on increasing. And now we've heard the thing, prevention is better than cure. But one more thing we want to make sure is investing in prevention. What does it mean? एक व्यक्ति है, एक कॉमन पर्सन का एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक है? एक पर्सन है, he smokes, ठीक है? और he is normal, he is healthy, he is smoking, and then he continues to smoke for 10 years, 20 years, 30 years, 40 years, 50 years, right? और ये आप में से कोई स्मोक करता है तो just take your example. And now what happens? 30 साल के बाद, 40 साल के बाद, suddenly the person comes, he started to have disease, heart attack, right? Now अब दोनों कंडीशन को देखिए. जब पहली बार स्मोकिंग स्टार्ट हुई थी, जब रोका जा सकता था, और जब हार्ट अटैक हुआ, अब दोनों की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं. स्मोकिंग रोकने के लिए कितना पैसा लगा हमारा, राइट? जस्ट अ सिंपल मोटिवेशन, लिटिल सपोर्ट, लिटिल मेडिकल सपोर्ट, गॉट इट? हार्ट अटैक के बाद का खर्चा, अगर एक इंजेक्शन भी लगना है 3 से 4 लाख का, राइट? और अगर मॉर्बिडिटी हो गई, लाइफ लॉन्ग दवाइयां, फिर जो व्यक्ति जितना कमाता था उसकी कमाई आधी हो जाएगी, फैमिली का बर्डन, right? So now prevention is not only important, prevention is much cheaper than the actual treatment, right? आप बच्चे हैं, यंग बच्चे, अगर आप देखते हो, they are actually, आजकल के बच्चे, आपको आइडिया है कि जो सबसे ज्यादा डेथ होने वाले जो लोग होते हैं एक्सीडेंट्स में, कौन सी एज ग्रुप है? 18 to 25 के आसपास, even little younger than that, because उनको लगता है कि हम तो यंग हैं, हमें कुछ नहीं होगा. See the data, information if you have. So when that thing is happening, and if you teach a person helmet पहनना, कितना पैसा लगता है? अगर आप लॉज बनाते हो स्ट्रिक्ट, हेलमेट नहीं पहनेगा 10,000 रुपए फाइन होगा, गाड़ी बाउंड हो जाएगी, राइट? ये लोग मरना ठीक है, लेकिन 10,000 देना अच्छा नहीं है. Will they follow it?
Yes. So what will happen there? At that time, prevention सस्ता है या head injury होने के बाद का accident, बाद का जो treatment है, right? So we know that in all these things we need to invest in prevention. 4 simple methods हैं, अगर हम follow कर सकते हैं, let's go ahead. This is the key lessons learned, right? And now NCD के जो इसके जो factors हैं, we are going to इसके बाद we'll going to cover. But आज कुछ countries में हम बात करते हैं कि कुछ कंट्रीज जो रियली अच्छा कर रही हैं उन्होंने क्या किया. What did they do? So the first country, yeah, so these are the successful interventions that were done, right? So in different parts of the world. Number 1, global target. आप करके देखिए. अब यहां पे जब हम बात कर रहे हैं, आई वॉन्ट यू टू सी द इंटरवेंशंस, राइट? और इंटरवेंशंस नॉट लाइक क्लिनिशियन जैसे हम लोग सारे हैं, क्लिनिकल में काम करते हैं एंड थिंक हार्ट अटैक हो गया तो क्या करना है, कितना खर्चा होगा, राइट? विल सी कि इंटरवेंशन कितनी सस्ती थी और जो रिजल्ट्स थे वो कैसे थे. नंबर 1, a 25% relative reduction in overall mortality from cardiovascular disease, cancer, diabetes and chronic respiratory disease. ये पहला टारगेट है, राइट? And probability of dying from any of the 4 more NCDs before age of 70 has reduced. अमेरिका ने कुछ चेंज किया, तो 23% से 19% आ गई है, राइट? अगर आप देखें एस्टिमेटेड ईयरली कॉस्ट, अगर आप $1 खर्चा करते हो सेविंग में, एडवर्टीजमेंट में, इट सेव्स यू अराउंड $10. WHO नंबर 1, टोबैको. प्लीज मेक श्योर, अगर यहां पे जो लोग बैठे हैं, इफ यू सी समबडी जो स्मोकिंग करता है या स्मोकिंग की तरफ प्रोन हो रहा है, या बॉयज या गर्ल कोई भी आप में से, यू आर गोइंग टू गेट, आपको टेम्पटेशन होगी, आपको दोस्त मोटिवेट करने वाले मिलेंगे. सिंपली से नो, राइट? वर्ल्ड वाइड जो डेथ्स हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की, वन ऑफ द बिगेस्ट कॉज फॉर देम इज स्मोकिंग. और कौन लोग होते हैं जो बोलते हैं हमें कुछ नहीं होता, हम तो टंगस्टन के बने हैं, राइट? एंड देन WHO की बेस्ट बाइस, रिड्यूस अफोर्डेबिलिटी ऑफ टोबैको. तरीके क्या हैं? टोबैको लोग कम कंज्यूम करें, टोबैको की कॉस्ट बढ़ा दो. आज की डेट में अगर आप लॉ को रियली फॉलो करो, सिंगल सिगरेट आपको मिलेगी नहीं, आपको पैकेट खरीदना पड़ेगा. टैक्स ज्यादा है, उसमें कॉस्ट ज्यादा है. टैक्स जो पैकेट है उसके ऊपर एक गला हुआ आदमी की शक्ल बनी हुई है, राइट? सो दैट जो पर्सन बचा हुआ है, यू कैन काउंटर देम. एंड नाउ एवरीथिंग, एंड देन वार्न पीपल, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप नहीं दिखेगी. आई डोंट नो अबाउट यू, बट जब हम लोग, ऑल ऑफ यू, व्हेन वी आर ग्रोइंग अप, हम किसी ऑफिस में जाते थे, वी यूज्ड टू सी पीपल, हम उन लोगों को देखते थे जो ऑफिस में से धुआं बिखरा होता था. लेडीज यूज्ड टू बी रियली फीलिंग बैड, धुआं ही धुआं है, एंड पैसे स्मोकिंग हो रही है. आज आप जाओगे, यू वोंट सी इट. व्हाई? इट वाज नॉट बिकॉज मार्केटिंग हुई और लोगों को बोला है, बिकॉज अब स्टर्न लॉज हैं. लॉ इज अनदर पार्ट. आपने लॉज बना दिए, इतना फाइन होगा तो होगा, एंड पीपल आर अफ्रेड. And then after a certain point in time, it becomes, then second is harmful use of alcohol. एक मिथ आपको मिलेगी, थोड़े अमाउंट में अल्कोहल का बहुत फायदा होने वाला है. रॉन्ग. हमारे HOD बोलते थे, and he was very firm on that. He said even a single drop of alcohol is bad for your health. He said I never drank. और जब scientific conferences होती हैं, he said you can argue with me and tell me benefits of alcohol. Give me the source and I'll counter that. Right? So now diet and physical activity, salt intake reduce करना है, trans fat reduce करने हैं, public awareness program करने हैं, promote and protect breastfeeding, cardiovascular disease. Number 2, 10% relative reduction in harmful use of alcohol. Harmful use अब नहीं कहते. If I agree with my sir, every use is harmful. Global target 3, 10% reduction in prevalence of insufficient physical activity. Sitting is new smoking now. There are times when जब लोग 3 घंटे 4 घंटे बैठे हैं लगातार लैपटॉप पे, your heart is not getting to work. उतने ही नुकसान हो रहे हैं जितने नुकसान तब होंगे जब हम सिगरेट पी रहे हैं, राइट? सो अपने ऑफिस में हम लोग एक घड़ी लगवा रहे हैं जिसमें हर घंटे बाद एक अलार्म बजेगा 1 मिनट के लिए. उस 1 मिनट के लिए पर्सन को खड़े होना है या जाके गिलास में पानी पी के आना है या बाथरूम जाके आना है, व्हाटएवर, सो दैट द पर्सन मूव्स, राइट? बिकॉज टाइम पता नहीं चलता. वी आर सो एंगेज्ड, वी डोंट नो कि हम बैठे हैं बहुत देर से. देन तेहरान में उन्होंने बाइसिकल शेयरिंग स्कीम बनाई. बाइसिकल है एंड देन यू विल शेयर, जिसको चाहिए $1 दो, 40 किलोमीटर जाओ वापस छोड़ दो. एंड दिस एक्चुअली रिड्यूस इनहेंस देयर मूवमेंट. टारगेट नंबर 4, 30% relative reduction in mean population intake of sodium and salt.
We take way more salt than is needed. राइट अब आपको लगता है हमें लगता है हम नहीं खाते हैं. टेक योर बिस्किट्स, चेक करिए सॉल्ट कितना है उसमें. आप आलू भुजिया का पैकेट लेते हो, सॉल्टेड पीनट्स लेते हो, आपको लग रहा है पीनट्स में प्रोटीन है, सॉल्ट देखो उसमें अमाउंट कितना है, एंड यू विल फाइंड इट आउट. सो these are the best practices that are being 30% relative reduction in prevalence of current tobacco use. Tobacco बार बार आएगा अगर आप पब्लिक हेल्थ में जाओगे, right? These are the practices. Australia, and then 25% relative reduction in prevalence of raised blood pressure or certain prevalence of raised blood pressure according to national circumstances. Now halt the rise of diabetes and obesity. कैसे करोगे? Diabetes, आपने स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस में डिफरेंस आईडी पता है आपको? डायग्नोसिस किसका होगा? आमतौर पे जब ट्रीटमेंट करने जाते हैं डॉक्टर के पास कौन जाता है? जिसको तकलीफ होती है. डायबिटीज और हाइपरटेंशन में बहुत बार किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, सालों साल लोग चलते रहते हैं, and then one fine day they have problem, and तब पता लगता है कि वो डायबिटीज थी या हाइपरटेंशन था. हमारा डायबिटीज का कैंप चल रहा है, ब्लड शुगर चेक हो रही है. जो कराने वाले डॉक्टर हैं वो बोलते हैं मेरा भी चेक कर लो, ब्लड शुगर 329, नेवर फाउंड आउट कि वो डायबिटिक थे, राइट? सो दैट इज वेयर द रोल ऑफ स्क्रीनिंग इज देयर. अभी हमने पूरी कैंपेन में पूरी डिस्ट्रिक्ट में 4 लाख से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग करी है, ब्लड शुगर चेक किया है, और जो जिनका ज्यादा था उनको दोबारा फॉलो करने के बाद जिनको जरूरत थी ट्रीटमेंट की उन्हें दिया. लोग दवाई से डरते हैं कि एक बार शुरू कर दी तो खानी पड़ेगी सारी उम्र, अच्छे के लिए खानी पड़ेगी, क्योंकि ये टारगेट ऑर्गन डैमेज करते हैं. आपका ब्लड प्रेशर, शुगर, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज प्रूवन है. टाइमली डायग्नोसिस होगा, डैमेज कम होगी, यू विल लिव हैप्पी, राइट? At least 50% of eligible people receive drug therapy and counseling. 80% availability of affordability, basic technologies and essential medicine, including generics required to treat major non-communicable disease. हमारे गवर्नमेंट में मैक्सिमम दवाइयाँ इनकी फ्री में अवेलेबल हैं. Availability of generic medicines according to income group, right? Action required. Finance, regulatory systems, rational selection and use of medicines and technologies. बहुत बड़ा हमारी कंट्री का कंट्रीब्यूशन है ड्रग रेजिस्टेंस के लिए, राइट? लोग एंटीबायोटिक्स के नाम लोगों को खुद को बताएं, गला खराब है, तुझे एजिथ्रोमाइसिन दे दो, दे गो परचेज इट, और 2 दिन खाने का छोड़ देते हैं, एंड देन दैट इज द रिजल्ट, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी फाइंड आउट दैट रेजिस्टेंस इज स्टार्टिंग टू बिल्ड अप, राइट? एंड मल्टी स्टेक होल्डर एक्शन. टेलीमेडिसिन, स्ट्रोक के लिए केरला में क्या किया गया था कि फिजिशियंस को, जहां पे फिजिशियंस इन द हॉस्पिटल्स वेयर स्ट्रोक यूनिट्स आर अवेलेबल, जहां पे फिजिशियन अवेलेबल है वहां पे सीटी स्कैन. आपको आइडिया है किसी को अधरंग पड़ता है, अगर थ्रोम्बोटिक है, ब्लड क्लॉट कहीं जमा हुआ है, विल शो यू वीडियोस. पर्सन हॉस्पिटल में आया, एक साइड पैरालाइज हो चुकी है, टाइम से पहुंच गया, सीटी स्कैन हुआ, 4 घंटे के बाद 6 घंटे बाद पेशेंट घर, बिकॉज 1 इंजेक्शन एंड टुक केयर ऑफ इट, राइट? सो नाउ दिस वाज द मेथड. जहां पे डॉक्टर थे वहां पे सीटी स्कैन की जो फैसिलिटी थी वो ऐसी जगह प्रोवाइड कराई गई, डॉक्टर सब जगह नहीं है, तो सीटी स्कैन होगा, और सीटी स्कैन एक दूर टेलीफोनिकली या इस पे अपने ईमेल से डॉक्टर को चला जाएगा, एंड द डॉक्टर विल रिपोर्ट देयर. सो की लेसंस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज की बैरियर्स टू पॉवर्टी एलिविएशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट. बट इन सब मेथड्स में आप देखोगे, इन सब चीजों में क्या हुआ है? पहला जो इंटरवेंशन हुई है, कितनी जगह पे हमने कहा कि दवाइयां मिलनी चाहिए, 1 या 2 जगह पे, राइट? रेस्ट ऑफ द थिंग्स वर प्रमोटेड, salt intake, sugar intake, right? Activity, movement, all those things were very economic, and we needed to invest time in just to make them aware and popularize that, right? So now this is all countries need to, and now this is how. But अभी फायदे क्या क्या हुए थे? अगर आप देखोगे, जब हम छोटे थे तो हम हॉस्पिटल में जाते, जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी उस टाइम पे हॉस्पिटलों में डायरिया के वार्ड भरे रहते थे बच्चों के. रोटा वायरस का वैक्सीन शुरू हुआ, ठीक है, और इस बार सेंटर से सडनली टीम आ गई चेक करने के लिए कि रोटा वायरस के कितने की वैक्सीनेशन हो रही है, आपके वो डायरिया वार्ड में कितने लोग हैं, बच्चे हैं, देख के आते हैं. एक भी बच्चा नहीं मिला उनको, नो किड विद डायरिया इन द वार्ड, जो भरे रहते थे, राइट? व्हाट डिड वी डू? सिंपल इंटरवेंशन, 1 वैक्सीन दैट टुक केयर ऑफ इट. देन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के लिए हमने बात कर ली. ड्रग्स एंड डी एडिक्शन, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, नो मैटर आपकी क्या एज है, आप बॉय हो गर्ल हो, most of you are going to be exposed to drugs in one form or another. Trust me. How do I know? हमने 10-10 साल के बच्चे एक्सपोज होते हुए देखे हैं, टॉफी में लेस करके दे रहे हैं उनको ओपियोइड स्कूल के बाहर, और बच्चा जब टॉफी नहीं खा रहा तो रेस्टलेस हो रहा है, राइट? एंड देन गेट्स इनटू ट्रैप ऑफ इट. सो नाउ द सिंपल सॉल्यूशन इज सेइंग नो, दैट्स इट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन, malnutrition. Now
डायलिसिस की बात कम कर रहे हैं, डायलिसिस का खर्चा बहुत है, हमें लगता है कि डायलिसिस के पेशेंट्स, किडनी फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं तो उनको हम लोग ट्रीटमेंट दे दें, बट मेन कारण क्या है इसका? डैमेज जब हो रही है, आपकी डैमेज के कारण में से एक है डायबिटीज, हाइपरटेंशन, लॉन्ग स्टैंडिंग, जो डैमेज हो रही है, इफ दे आर कंट्रोल्ड, हमारे पास पेशेंट्स ऑटोमेटिकली कम आ जाएंगे, हो जाएंगे, राइट? मेल न्यूट्रिशन, इन्फेक्शियस डिजीज एंड चाइल्ड डेथ्स। आरबीएस के में क्या हमें वाकई में ज्यादा जरूरत है मैन पावर की? अगर आपको 5 मिनट में ट्रेनिंग दे दूं एक 10 साल के बच्चे को कि चाइल्डहुड कैटरेक्ट कैसे स्क्रीन करना है, 10 साल का बच्चा, ही कैन डू दैट, राइट? और आरबीएस के में यही हुआ है, जो टीम स्क्रीन कर रही है डॉक्टर्स वो अलग है, बट देन स्क्रीन करने के बाद दे रेफर इट टू द राइट पर्सन एंड ट्रीटमेंट हैपेंस। कम्युनिटी प्रोसेस, जहां पे बहुत छोटी छोटी लेवल की इंटरवेंशन है जो हमारे आशा वर्कर्स अपने लेवल पे कर सकती हैं। न्यूट्रिशन एंड देन मिडवाइफरी केयर। अभी आपको शायद आइडिया नहीं होगा, लेकिन अभी अगर आप कभी गायनी वार्ड में गए हो, किसी की डिलीवरी हुई हो, आप किसी से मिलने गए हो, क्राउड कितना होता है देखा आपने वहां पे, राइट? एंड डॉक्टर इज ऑलवेज बिजी। अभी जो मिडवाइफरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है उसमें क्या है, नर्सिस विल सी द पेशेंट फर्स्ट, दे विल बी ट्रेन्ड। नॉर्मल डिलीवरी में डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर सिर्फ तभी बुलाया जाएगा जबकि इमरजेंसी होगी, अदरवाइज जब उसको लगेगी जरूरत है, अदरवाइज नर्स विल टेक केयर ऑफ इट, राइट? तो क्या होगा, डॉक्टर का टाइम बचेगा एंड डॉक्टर विल कम ओनली व्हेन एंड वेयर इज रिक्वायर्ड। तो वहां पे फोकस और एनर्जी ज्यादा अच्छे से अपनी फोकस कर सकता है। सो दिस सी, अब सिर्फ मल्टी सेक्टोरल अप्रोच है, सिर्फ हेल्थ नहीं है। अगर आप देखोगे यहाँ पे एनसीडी के लिए हेल्थ वाले सब सेक्टर में काम कर रहे हैं, एजुकेशन टोबैको के अगेंस्ट बता रहा है, फिनेंस वाले पैसा पे कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वाले हैं दे आर टेकिंग केयर के जो फूड है वो अच्छा है, न्यूट्रिशियस हो, इंडस्ट्री वाले वो इंश्योर कर रहे हैं कि जो फूड है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, ट्रांसपोर्ट वाले इंश्योर कर रहे हैं कि फिजिकल एक्टिविटी हो रही है। ऑल दिस डिपार्टमेंट्स आर कमिंग टुगेदर टुवर्ड्स मेकिंग पीपल हेल्दी, right? So these are the methods, and now we see, अब अगर आप इस इमेज को देखोगे, this will make more sense to you now, because now health system is not just doctors and hospital. We know the value of medicines, the value of leadership, the value of information, financing, service delivery and workforce, right? And this is जो गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है कि सर्विसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचे, सस्ते से पहुंचे और नॉन कवर्ड लोगों तक जाएं, राइट? फिनलैंड में 1972 से लेकर 1992 तक उन्होंने ये सब चीजें की, कुछ नहीं, बहुत चीज नहीं करा, डाइटरी चेंजेस करी। कैसे? सिर्फ लोगों को एजुकेट नहीं किया, राइट? दे डिड नॉट जस्ट एजुकेट द पीपल, व्हाट डिड दे डू? दे डिड द वर्क, पॉलिसीज बनी उसके अराउंड। इससे ज्यादा सॉल्ट आप नहीं डाल सकते फास्ट फूड वाले, राइट? सो स्कूल्स में एजुकेट करना शुरू किया, एग्रीकल्चर वालों के साथ के लिए लीगली बाउंड किया गया कि आप इससे ज्यादा डिफरेंट नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंड? इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी, रिड्यूस स्मोकिंग, एंड देन करीबन 85% फॉल हुआ है एनसीडी जो फॉल था, राइट? एनसीडी जितनी होती थी, डेथ्स होती थी, 85% फॉल। इज दैट्स अ बिग वन, राइट? सो नाउ यू नो व्हाई आई वाज सेइंग दैट वी नीड टू एक्ट। ये है सारे फैक्टर्स जिनके बारे में मैंने बात की थी, एंड दिस इज वेयर द प्रॉब्लम अराइज, एंड दिस इज where solution need to be focused. And this is, if you are to here to stay in health sector, this every area need people, right? And these are the areas, newborn बच्चा है, child है, adolescent है, pregnant woman है, man and woman है. This is the complete life cycle approach, जहाँ पे हम कहते हैं कि हमारे सारे प्रोग्राम छोटे बच्चे से लेके old age तक should cover everybody, right? And when we take care of all of them, we find that health becomes accessible, affordable, and available to most of the people. So that was it, and it all starts with you, right? It all starts with you. Take care of you, take care of your health, and become a part of healthy workforce so that we can move ahead. Thank you so much. Thank you so much, sir, for helping us become more aware of the scenario. Now, let's move forward. Let me introduce you all to our next speaker, Dr. Chanchal Garg. Dr. Chanchal Garg, M.Pharm, PhD, postdoctorate in pharmaceutical sciences, is having more than 15 years of experience in academics, research, and administration. Her research area is phytochemistry,
quality control, and standardization of medicinal plants and formulations, in which she has published quality research work in high impact fact journals. Also, she has 1 patent in process, 3 books, and several books chapter to her credit. She has delivered a number of lectures at different professional platforms in India and abroad. So let's welcome Honorable Dr. Chanchal Garg on stage. Good evening, everyone. I feel all are tired till now. Being a last speaker, it is very tough to hold the audience. है ना? लेकिन I should tell you, you should cheer up. I will finish it very fast. ठीक है? Till now, I guess you all are well versed with all the challenges of the developing countries about the healthcare challenges, right? आपको solutions भी पता हैं, आपको challenges भी अब तक you would have known. So first I thought I should deliver the talk on that. Then I thought it's enough now. You know all the challenges, even the skit which the students of nursing have shown here. It shows that you well know about what are the challenges. So being a pharmacist and you also being a pharmacist, I will deal with medicines, their safety and the regulations. Okay. So what is medicine? You all know what is medicine. Medicine is a chemical compound which is generally used to treat or the symptoms or the disease, right? And today's with the advancements of the medicines, you can treat so many diseases. And also, as a pharmacist, you know, there are different forms of medicaments. You must have studied in your ceutics, tablets, capsules, injections, sprays, creams, everything. So you must have studied in your course, which is well designed by the Pharmacy Council, right? And there are so many different sources also from which these medicines can be obtained, like plants, animals, minerals. Different sources are there, which you are studying in your different subjects, right? But I would like to tell you about this, the medicinal products. There are mainly drugs which you are studying. They are mainly prescription drugs, generic or branded drugs, and the over-the-counter drugs, which already they have been mentioned by Dr. Garg, that you should know as a pharmacist, because many of you will become open their pharmacies, or they will manufacture them, or you will open your industries and all. So you should know what are prescription drugs, generic drugs, branded drugs, and over-the-counter drugs, which I will little explain to you. So what are prescription drugs? Generally, what are prescription? A doctor writes a prescription, and these are brought at the pharmacies, right? You can only get this medicine after the prescription of a doctor. And this is also a patient specific, because every patient has different diseases, different problems, and different medicines are prescribed by the doctors to them. So they can be only bought after the prescription of a medical practitioner or a doctor. These drugs are generally come into the market after the many clinical trials, and then they are approved by the Food and Drug Administration. Then what are the over-the-counter drugs? Over-the-counter drugs क्या होता है? आजकल generally क्या होता है? लोग directly they go to the pharmacy or the shop and they say we want this drug for the headache. Headache है जी मुझे ये चाहिए, या acidity हो गया है. So these are the drugs which are brought at the shops without any prescriptions. They are called the over-the-counter drugs.
For common examples, you can say that there's balms that they are paracetamol. Normally, paracetamol, किसी को भी बुखार है, they don't go to the doctor for the prescription. वो जाते हैं सीधा medical shops पे and they get a आपने क्रोसिन लिया, paracetamol लिया, and you get it very easily without any prescription. These are not included under the prescription schedules. Then branded drugs. Branded drugs क्या होती हैं? These are the drugs which are sold under the names or certain names of the brands. Specific trademark is there. Like paracetamol comes under the name Crocin. That is the Crocin is the branded name, right? So generally the companies which manufacture them, they give the name to their specific drug which they are manufacturing. So these are the branded drugs. They can be both over-the-counter drugs also or the prescription drugs. Then generic drugs. Generic drugs क्या होती हैं? They are the drugs which come with their generic names. जैसे paracetamol. ठीक है ना? They are sold. They are very cheaper as compared to the branded drugs. क्योंकि जो उनके लिए clinical trials करना है उनको ज़रूरत नहीं है. They already are done. They need not spend money on that. They are comparatively very cheaper. But they have the same effect as the branded drugs. They have the same efficacy, same safety profile, but they are cheaper than the branded drugs. Here are some examples about this. You can see there's a lot of difference in the prices of the branded as well as the generic drugs. Like common example is paracetamol, which you can see Crocin is of rupees 11 and generally paracetamol only 2.45. So much gap is there between the prices of the generic and the branded drugs. Some other examples also I have given. So on the whole you can see there's a lot of differences there. But then also if generic drugs are so cheaper, but still why we people are not going and buying the generic drugs? We always go and ask for the branded drugs. There are certain reasons for that. Because जो pharmacy companies हैं, they are profit driven, ठीक है? And the pharmacists, they are not enthusiastic. जो आपकी shop पर जो आपको branded drug है, they have so much profit in that selling them. तो इसीलिए क्या करते हैं वो? They sell the branded drugs. If you go, you say कि मुझे ये चाहिए, तो वो कहेंगे you take this. They have the same thing, but that is costlier. So they are not enthusiastic to sell the this generic drugs. And moreover, the customers also. उनको लगता है if the drug is cheaper, that is not effective. So they say the efficacy of the drug, they depend upon the cost of the drug. Also, according to the Drug Technical Advisory Board, they say that every pharmacy should have a separate shelf to stock the generic drugs, which they don't want to do, which the pharmacies don't follow. They say they are not sold, why should we give a separate space to them? They don't give them. So they also are not happy to keep the generic drugs. And generally, Jan Aushadhi centers, although government has taken this step to open the Jan Aushadhi center where the generic medicines is available, but if you see is for a large number of population of a country, but if you compare the ratio of the Jan Aushadhi centers are very less. So people don't get it also. Then coming to the drug regulatories. This you have already studied. Drug regulatory you will be studying in your course, or some of them you must have studied also. Drugs and Cosmetics Act. I won't explain what is Drug and Cosmetics Act here. But I would like to tell that the medicines in India are regulated by Drugs and Cosmetics Act. And there are different schedules. Being a pharmacist, or you are going to open the some industries or your manufacturers, you should need to learn some of this, that how much, what are the regulations you should follow in order to prescribe these drugs, or you should what label should contain in these drugs, right? So these are some things which you have already studied in your course. Schedule H, Schedule X, Schedule G, Schedule, all these are the drugs which have, they have special drugs. They have special
what you say, label in which you should mention some of the warnings which are required. So there are very important things to mention. Mainly by the CDS course, and I will not explain in detail. Then these are some main functions of the CDS core which you will study in your course. But I would like to say that as a pharmacist, you should sensitize and make the society aware about the pharmaceutical products. Here the major role, not only of the physicians, but also as a pharmacist, you also play a major role for sensitizing and awareing the society. First, like patient-centered approach should be there. Patient-centered approach means the well-being and the safety of the patient comes the foremost. Secondly, clear communication. Clear communication means the patient should be accurately told about the disease. He should know about the risk factors and about the pharmaceutical product which you are giving to them, that what are the risks and what are the, effects of the drug which is prescribed to them. Also the informed consent. You should, if any pharmaceutical product you are inserting to them, they should be well informed to them. Also they should be made aware. If any adverse reactions are there, it should be at once brought into the notice. Then pharmacovigilance. The latest pharmacovigilance data should be known and informed so that you can see the effect of the pharmaceuticals. Then cost-effective approach. Cost-effective, as I already told, you should promote the generic drugs. Then also the patient should be told about the counterfeit drugs. They should know the authentic source from where they can get the actual good quality products. Also they should be told how to dispose of the pharmaceutical waste. They should collaborate with other pharmacy professionals and healthcare professionals. But at the end, I will always say, I would just like to say that you should feel that medications always heal, but mistakes can have a hazardous effect. They can kill. Okay? Thank you. I hope I'm not so... Zyada to nahi tha, it was small, okay? But it would have little bit effect on you. It would have given you some knowledge. Okay, thank you so much. Thank you for your expertise and knowledge with us. Your knowledge and guidance will help our students further to achieve their goals. Now, last but not the least, I would like to invite our organizing secretary, Mr. Puneet Kaushal, to come on stage for a vote of thanks. Good evening, one and all present here. It is a privilege and a great joy for me to extend a vote of thanks to all those who have contributed one way or the other to make this national conference a success. I take opportunity to thank our respected chairman, Sir Naresh Chauhan ji, and all management for being the driving forces behind this whole process. I am grateful to the speaker, Dr. Anil Kumar, Chairperson, University Institute of Pharmaceutical Sciences, and Dr. Professor Munish Garg, Department of Pharmaceutical Sciences, MD University, Rohtak, Haryana. Third speaker, respected Dr.
Pavneet Kumar, author and district program officer, district hospital, Mandi, and our last keynote speaker, Dr. Chanchal Garg, principal, World College of Pharmacy, Pharmaceutical Sciences, Jhajjar, Haryana. After that, for accepting our invitation to be here with us on the special occasion and for motivating us with their enthusiastic speech. It's been a great pleasure. Thank you, sir. Thank you, ma'am. I extended my sincere thanks to our respected principal, Dr. V.K. Gupta ji, for his great effort and encouragement in conducting this program. Thank you, sir. After that, I am happy to thank our staff, students who worked off the screen to move this function a colorful one. Finally, I would like to thank all the principal, teachers and participants from various colleges for their involvement and willingness. Ladies and gentlemen, we look forward to a great conference. Let us together make it a grand success. Thank you, one and all present here. Thank you so much, sir. Now I would like to request our respected principal, sir, respected chairman, sir, and Mrs. Pooja Chandel on the stage to honor our organizing secretary, Mr. Puneet Kaushal. Now I would like to request respected chairman, sir, and principal, sir, to honor our respected Pooja Chandel, ma'am. Thank you so much, sir. What an uplifting and productive day it has been. We extend our sincere gratitude to all the speakers, panelists, and participants for making this conference a great success. We hope you have gained valuable knowledge and made important connection during the day. We look forward to seeing you again at our future events. Have a safe journey home. Goodbye and thank you.